Namaskar, dosto. I am Purnima from Fertility Dost, and I welcome you all to this very new session with Fertility Dost. Hello, Good evening, sir. namaskar. Good evening. So, viewers, we have Dr. Utvij Dalal with us. He's from Janani IVF Center, New Delhi. And our viewers from Delhi NCR, Dr. Utvij is a very known face. उनके साथ बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज जुड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सालों तक ये मदरहुड की खुशी नहीं मिल पाई थी, बट दे विजिटेड डॉक्टर उतवेज एंड rest is the history, we can say. And with Dr. Utvej, we are going to take many queries, many questions. So please, viewers, start pouring your comments in comment section. Dr. Utvej, शुरू करने के लिए वेरी कॉमन क्वेरी जो हमारे सामने अक्सर आती है, व्हाट इज द राइट एज? Yes, ma'am, a very relevant question. First of all, good evening, and I welcome all the guests that we have. And right now, of course, as we know, what we are going through as a country is the government is putting in a lot of regulations. So there is a new bill that is passed, which is called ART and Surrogacy Bill, जिसमें infertility को की मैनेजमेंट को लेके जो भी IVF सेंटर्स या इवन IUI क्लिनिक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ डायरेक्टिव्स पास किए गए हैं जहाँ पे इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और जो बेसिकली डायरेक्शनलेस क्लिनिक्स होते थे उनको एक डायरेक्शन दी जाएगी. नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि किस एज पे शुरू करें. एज वी नो द मैरिटल एज इन इंडिया इज सेट एज 21. So after the age of 20, after a lady gets married, a couple is generally advised to wait till 12 months, if especially the woman is young. If the woman is in her 20s, there is no panic as such कि अगर पहले के ज़माने में जैसे especially our in-laws and older generation people used to put pressure, तो ऐसा कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है. For 12 months, if they have a regular intercourse, they can hope for conceiving naturally. I would say the definition of infertility is applying only after there is a regular intercourse. अगर वो husband wife साथ में रहते हैं and there are regular relations, and in spite of that 12 months have elapsed and there is no result, not a single time, then it could be said that the couple is infertile. Now again, this definition is applicable to those couples who are young. अगर if they are in their 20s and all. There are cases because of women upliftment, and there are so many women we see who get married in their 30s or even late 30s for that matter, because they are all career oriented. They want to delay childbearing, they want to delay marriage if not child marrying, and sometimes they get married when they are in their 30s. So if that is the case, then they should not wait beyond 6 months. So 6 months, especially when the wife is in her 30s and they get married, if the woman is in her 30s, only 6 months of trying to conceive and there is no result, I would say they should meet a gynecologist. So this definition of infertility कि कब डॉक्टर से मुलाकात करे, कब विजिट करे, is depending on the age of the woman. As far as the lady's age is concerned, the women's age is a very very important factor to determine कि इनका रिजल्ट और इवन ट्रीटमेंट जो ऑफर होती है इनफर्टिलिटी के लिए, वो कौन सी ट्रीटमेंट ऑफर की जाएगी, क्योंकि women they generally age faster than men. So if a lady crosses a certain age, and especially this key number is 35, especially if the woman has crossed the age of 35, they should not wait beyond 6 months, even sometimes 3 to 4 months, that's it. But if, as I said, the couple is young, the lady is in her 20s, then safely 12 months of regular intercourse, and only then they can consider that something is wrong and they can visit the doctor. And Dr. Utvej, usually we know that
पहले तो people just go for ultrasound to track their ovulation, but आजकल ये हो गया है कि it is better to be safe inside our homes, and we are depending lot more on ovulation kits. यहाँ Yes, yes, ये भी हम कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस आ गया है कि why to visit the center each and every time. So correct, correct. according to you, ऐसी कौन सी किट्स हैं जो रिलायबल हैं? बिकॉज फोन एप्स भी हैं बहुत सारे ओवुलेशन Right, ट्रैक करने के right, लिए। right. तो व्हाट यू सजेस्ट कि व्हाट टाइप ऑफ किट्स शुड वुमेन यूज, एंड इज दिस काइंड ऑफ फोन ऐप, इज दिस रिलायबल सोर्स, और हम किट्स पे ही फोकस करें? Very, very good questions, madam. And I would say these are the questions of the hour. So I'll answer each one of them separately. To answer the first question, ovulation kits is not a new thing. It could be a new thing in India, but Bahar, European countries or US में ये हमेशा ही मिलते ही थे, and they are fairly accurate. So I would say they are like a blessing. They are a very, very relevant piece of equipment or instrument that patients can have in their homes. दे आर वेरी यूजफुल, जस्ट लाइक हमारे पास प्रेगनेंसी की किट आती थी जिसमें आइडियली फर्स्ट वाइट यूरिन सैंपल एक या दो ड्रॉप रख के हम किट में आसानी से देख पाते थे whether a lady is pregnant or not. Similarly, there are ovulation kits available, also medically called as LH kits. LH, जो किसी भी बड़ी फार्मेसी में उपलब्ध है. बेसिकली वो LH किट्स क्या डिटेक्ट करती है कि लेडी जब ओव्यूलेशन के पास जाती है या ओव्यूलेशन होता है तो वो बॉडी में ब्लड में एक LH नाम का हार्मोन बढ़ जाता है. ऑलमोस्ट जितना नॉर्मल होता है उससे 3 गुना 4 गुना इवन 10 गुना भी हो जाता है. तो वो जब होता है तब ये LH या ओव्यूलेशन किट्स में पॉजिटिविटी आ जाती है. So these ovulation kits are simply called ovulation kits or LH kits. They are commonly available without any doctor prescription across major pharmacies, and that is a very good useful way of knowing कि ovulation हमारा हो गया है, जो कि रिसेंटली 24 आवर्स के पीछे हुआ अगर हम रोज करें, या फिर जल्द ही होने वाला है, मतलब फॉलिकल रप्चर जल्द ही होने वाला है. एंड इफ दैट हैपेंस देन हम डेफिनेटली वी कैन ट्राई फॉर रिलेशन इन द नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स, which means that हमारा अगर ओव्यूलेशन के आसपास रिलेशन हो रहा है तो हमें कंसीव करने के लिए ज़्यादा सहूलियत मिलती है. देयर आर मोर चांसेस ऑफ कंसीविंग इफ अवर LH किट या ओव्यूलेशन किट सेज कि हमारा ओव्यूलेशन हो गया है या होने वाला है. The apps that are commonly installable these days, these apps do not have the ovulation kit or the LH kit in their fundamental. What they are working on is a basal body temperature. तो बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, जैसे हम मॉर्निंग में उठे और सबसे पहला काम हमने एक थर्मोमीटर डाला और टेम्परेचर लिया. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओव्यूलेशन के बाद किसी भी लेडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो थर्मोजेनिक होता है, मतलब उससे थोड़ी अंदरूनी गर्मी बढ़ती है. बट द डिफरेंस इज वेरी वेरी माइनर. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हम फीवर में आ जाते हैं, नहीं. It still stays at normal body temperature. It is only 0.5 degrees more than pre-ovulation levels, and this is the post-ovulation time. तो वो टेम्परेचर शिफ्ट के हिसाब से the app is trying to show कि हमारा ovulation या अभी हुआ है या कल हुआ था या basically recently हुआ है, and the lady should try to have a relation. But the problem with this basal body temperature chart is it is a very crude, it is a very inaccurate way of figuring out the time of ovulation. That is the first disadvantage. Second disadvantage is it can only be retrospective. मतलब पहले ovulation होएगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ेगा और आपका टेम्परेचर जब तक बढ़ता है already 2-3 days have gone off, and by the time we know about it हमारे 2-3 दिन चले गए और हम जो fertile window था वो probably shut भी हो गया है. So there is no point in knowing कि हमारा ovulation हुआ था because it is retrospective. ये past वाली बात है. So these apps that work on basal body temperature are not that useful, but ovulation kits certainly are very very useful because they are very quick, and as soon as the ovulation happens हमारा ये किट में पॉजिटिव आ जाता है तो कपल को पता चलता है कि अभी हम काफी फर्टाइल टाइम से गुजर रहे हैं. Right. So people are usually asking, are these kits are safe and reliable?
So Yeah, yes. absolutely. They are urine kits. इसमें कोई ब्लड कलेक्शन होता नहीं है. सिंपल फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आप जब यूरिन वॉइड करने जाते हैं तो जैसे यूपीटी किट्स होती थी, यूरिन प्रेगनेंसी किट्स होती थी, वैसे ये यूरिन ओव्यूलेशन किट्स है. सो दे आर डेफिनेटली वेरी सेफ. आप ऑल यू हैव टू डू इज पास ए यूरिन सैंपल. एंड एज आई सेड, दीज आर वेरी एक्यूरेट. These are cheap also. They are not very expensive. They are very cheap way of knowing कि हमारा LH हार्मोन बढ़ा है, मतलब हमारा ओव्यूलेशन या अभी होने ही जा रहा है या फिर कल हो चुका है. So I would say they are very useful kits जिसको especially जिन couples को घर पे try करना है, naturally conceive करना है, I would say these are immensely useful, these kits. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more amazing videos on fertility. And to get your customized fertility coach program, visit www.fertilitydost.com.